Good evening, everyone. Good evening, everyone. My name is Saransh Vershi, and I'm a lecturer in Suresh Gyamihar University. And today we will discuss about the NTU method, which is the and today we will discuss about the NTU method, which is part of the hidden mass transfer. Here we will discuss about introductions and some numericals. First of all, we will discuss about the introductions. The Firstly, we will discuss about the full form of NTU. Is number of transfer unit. The number of transfer unit, which is also called NTU method, is used to calculate the rate of heat transfer in heat exchanger, especially counter current exchanger, where there is insufficient information to calculate the log mean temperature difference, which is also called LMTD, which is discussed in the previous video. In heat exchanger analysis, if the fluid inlet and outlet temperature are specified or can be determined by simple energy balance, the LMTD method can be used. But when these temperatures are not available, the NTU or the effective method is used. कि इस वीडियो के अंदर हम एनटीयू मेथड के बारे में बात करेंगे कि जिसकी फुल फॉर्म हमारी होती है नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट। इस नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट मेथड को जो है हम लोग इफेक्टिवनेस मेथड भी बोलते हैं, जिसका यूज आता है हमारे किसी भी हीट एक्सचेंजर में उस हीट ट्रांसफर की रेट को कैलकुलेट करने के लिए। अब जो कि स्पेशली इसका यूज जो है हम काउंटर करंट हीट एक्सचेंजर के अंदर करते हैं। अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर जब हमने एलएमटीडी मेथड और एएमटीडी मेथड के बारे में जब मैं बात करी थी, तो उस एलएमटीडी मेथड और एएमटीडी मेथड के अंदर भी हमने पर्टिकुलर इसी एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में बात करी थी कि किस तरीके से अपन मतलब कि हीट एक्सचेंजर में जो उनकी हीट ट्रांसफर की जो रेट है उस हीट ट्रांसफर की दर है इन अ पर्टिकुलर सिस्टम व्हेन इट इज ट्रांसफर बिटवीन वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ पर्टिकुलर सिस्टम। देन तो उस एक पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर जो टेम्परेचर डिफरेंस जो आ रहा था उसका मतलब कि मतलब उसकी बात हम कर रहे थे एलएमटीडी मेथड के अंदर में। और वही सब कॉन्सेप्ट जो है हम यहाँ पर भी यूज में ले रहे हैं। मतलब कि जो कॉन्सेप्ट हमारा एलएमटीडी मेथड के अंदर हमने हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था वही पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो है हम हमारे यहाँ पर एनटीयू मेथड के अंदर यूज में लेंगे। कि जिस तरीके मतलब कि जो काम हम वहाँ पर कर रहे थे वही काम हम यहाँ पर करेंगे। मीन्स कि किसी भी हीट एक्सचेंजर में जो हीट ट्रांसफर की रेट को कैलकुलेट करेंगे। बट बट इन द केस ऑफ एनटीयू मेथड इसका यूज जो है स्पेशली जो है हम काउंटर करंट एक्सचेंजर के अंदर करेंगे। ठीक है। uh, in heat exchanger analysis, if the fluid inlet and outlet temperature are specified or can be determined by simple energy balance, the LMTD method can be used. मीन्स कि मतलब कि उस जब एलएमटीडी मेथड के अंदर मतलब कि जैसा कि मैंने बोला कि जो पर्टिकुलर काम या जो पर्टिकुलर वर्क जो है हमारा एलएमटीडी मेथड या एएमटीडी मेथड के थ्रू हो रहा था वही काम हम यहाँ पर हमारे एनटीयू मेथड के अंदर कर रहे हैं। बट क्या डिफरेंस आया एक हमारे एनटीयू मेथड और एलएमटीडी एंड एएमटीडी मेथड के अंदर? तो वो डिफरेंस मेजर डिफरेंस के बारे में या जब बेसिक डिफरेंस के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसका हमारा बेसिक डिफरेंस यही है कि एलएमटीडी मेथड के अंदर या एएमटीडी मेथड के अंदर सर जब आप किसी हीट एक्सचेंजर के हीट ट्रांसफर की रेट को कैलकुलेट करते हो तब वहाँ पर हमको टेम्परेचर डिफरेंस दिया हुआ होता है। इट मीन्स कि कोई भी जो एक मेरा पर्टिकुलर सिस्टम है लाइक कि ये एक मेरा सिस्टम है इसके इस पॉइंट से लेके इसके इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक जो मेरी हीट ट्रांसफर जो हो रही है उस एक पर्टिकुलर हीट ट्रांसफर के अंदर मुझे पता है कि जो मेरे इनलेट का टेम्परेचर कितना है और आउटलेट का टेम्परेचर कितना है और उसके बेस पर एक आउटपुट मैं निकालूंगा। बट इन द केस ऑफ एनटीयू मेथड
we will not understand about the value of the temperature and the rate of the temperature difference between the uh, between inlet and outlet temperature in a system. देन और उस केस के अंदर मतलब कि जब हमको बट when this temperature are not available the anti और effectiveness method is used. बट जब हमको जब इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर से मुझे ये पता है कि इस हीट एक्सचेंजर के अंदर हीट का ट्रांसफर हो रही है, लेकिन उस हीट ट्रांसफर की रेट मुझे कैलकुलेट करनी है, बट मुझे उसके टेम्परेचर डिफरेंस की वैल्यू जो है वो मुझे मालूम नहीं है। उस केस के अंदर हीट एक्सचेंजर की हीट ट्रांसफर की रेट को कैलकुलेट करने के लिए जो एक पर्टिकुलर मेथड यूज में लिया जाता है उसको हम बोलेंगे एनटीयू मेथड, और नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट्स मेथड और इफेक्टिवनेस मेथड आर यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर concept. Now, the effectiveness oblique NTU method is very useful for all the types of for all the flow arrangements beside parallel flow and counter flow ones, because the effectiveness of all other types must be obtained by a numerical solution of the partial differential equation, and there is no analytical equations for LMTD or effectiveness. But as a function of two variables, the effectiveness of each type can be presented in a single diagram. मीन्स कि जो ये एक हमारा इफेक्टिवनेस और एंटी मेथड जो होगा ये हमारे ऑल टाइप्स ऑफ फ्लो अरेंजमेंट, लाइक लाइक चाहे हम यहाँ पर पैरेलल फ्लो अरेंजमेंट के बारे में बात करें या चाहे हम यहाँ पर काउंटर फ्लो अरेंजमेंट के बारे में बात करें, ये दोनों ही मेथड के अंदर यूजफुल होता है। बट कि जैसा कि अभी हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर डिस्कस किया था, बट मेनली इसका यूज जो है वो हमारे काउंटर फ्लो अरेंजमेंट्स के अंदर करते हैं, बिकॉज द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑल अदर टाइप्स must be obtained by numerical solution of the partial differential equation। क्योंकि इस मेथड के मतलब कि इसका यूज जो है मतलब कि जब इस एंटी मेथड का यूज जो है हम हमारे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए करते हैं, एंड देयर इज नो एनालिटिकल इक्वेशन फॉर एलएमटीडी और इफेक्टिवनेस, but as a function of two variables, the effectiveness of each types can be presented in a single diagram। एल एम टी डी मैथड और ए एम टी डी मैथड के अंदर जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जिस पर डिस्कशन हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर किया है उसके अंदर हमने एक पर्टिकुलर वर्ड के बारे में बात करी थी, और वो हमारा पर्टिकुलर वर्ड ये था कि इस मेथड का मतलब कि एलएमटीडी मेथड और एएमटीडी मेथड का यूज जो है हम हमारे स्टेबल स्टेट कंडीशन के अंदर करते हैं। जहाँ पर भी हमारी डायनेमिक कंडीशन आ जाएगी वहाँ पर हमारा एलएमटीडी मेथड या एएमटीडी मेथड जो होगा वो हमारा अप्लाई नहीं होगा। बट इन द केस ऑफ एनडीयू मेथड इसका यूज जो है आप स्टेट कंडीशन के अंदर भी कर सकते हैं और डायनेमिक कंडीशंस के अंदर भी कर सकते हैं, जैसे कि इसके अंदर दिया गया है कि बट एज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स the effectiveness for each type can be presented in a single diagram. To define the effectiveness of a heat exchanger, we need to find the maximum possible heat transfer that can be hypothetically achieved in a counterflow heat exchanger of infinite length. Therefore, one fluid will experience the maximum possible temperature difference, which is the difference of the displaced tank THI minus TCI, the inlet temperature of the hot stream and the inlet temperature of the cold stream। इसके अंदर की हमको डेफिनेशन दी गई है कि इफेक्टिवनेस ऑफ द हीट ट्रांसफर कि वी नीड टू कि हमें आवश्यकता है to find the maximum possible heat transfer that can be hypothetically achieved in a counter flow heat exchanger of a infinite length। मतलब कि जो भी हमको इनफाइनाइट लेंथ दी गई है और उस इनफाइनाइट पर्टिकुलर इनफाइनाइट लेंथ के अंदर काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर जो होगा उसका हाइपोथेटिकली मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी पॉसिबल हीट ट्रांसफर की वैल्यू हमको मिल सकती है उसका डिस्कशन जो है हम हमारे इफेक्टिवनेस मेथड के अंदर करेंगे या एनटीयू मेथड के अंदर करेंगे या नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट मेथड के अंदर करेंगे। मीन्स कि अगर मैं बात करूँ कि एक जो पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर जो है कि हमारा कितना मैक्सिमम आउटपुट हमको मिल सकता है या कितना मिनिमम हीट लॉस हमको मिल सकता है उसका डिस्कशन जो है हम हमारे इस मेथड के अंदर करेंगे। एंड एंड इन दिस डायग्राम एंड इन दिस video we will discuss about the some formula like THI minus TCI which we calculate
the temperature difference between the two fluids, which is also discussed in the LMTD and AMTD method in a previous video, where where THI where THI is the inlet temperature of the hot stream and TCI is the temperature of inlet temperature of the cold stream. THI is the inlet temperature of the hot stream and TCI is the inlet temperature of the cold stream. The method processed by calculating the heat capacity rates, mass flow rates multiplied by the specific heat displaced Ch and displaced Cc for the hot and cold fluids respectively, and denoted the smaller ones as displacement C minimum. C minimum is equal to minimum mccp into C into m into h Cp into ph. A quantity Q maximum is equal to C minimum into Thi minus K Tci. Is then found where display style Q maximum is the maximum heat that could be transferred between the fluids unit time, मतलब कि एक with respect to time, चाहे आप यहाँ पर 2 सेकंड लेके चल रहे हो 5 सेकंड या 10 मिनट, तो उस एक पर्टिकुलर सिस्टम तो उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर एक पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर कितनी अमाउंट ऑफ हीट फ्लो हो रही है, कितना एक इनपुट देने पर कितना पर्टिकुलर कितना मैक्सिमम आउटपुट हमको मिल रहा है, कितना मिनिमम रेडिएशन हीट लॉस हमको मिल रही है, उसका डिस्कशन जो है हम यहाँ पर हमारी एन टू यू मेथड या इफेक्टिवनेस मेथड के अंदर करते हैं. Must be used as it is the fluid with the lowest heat capacity rate that would, in this hypothetical infinite length exchanger, actually undergo the maximum possible temperature change. The other fluid would change temperature more slowly along the heat exchanger length. The method at this point is concerned in this point, the method is concerned only with the fluid undergoing the maximum temperature change. The effectiveness is the ratio between the actual heat transfer rate and the maximum possible heat transfer rate. Here we discuss about the actual heat transfer rate and the maximum possible heat transfer rate, which we calculate the effectiveness method in this concept are used, which is then found Q maximum is equal to C minimum into THI minus TCI. Is thus is then found where Q maximum is the maximum heat that could be transferred between the fluid per unit time. C minimum must be used as it is the fluid with the lowest heat capacity rate that would, in this hypothetical infinite length exchanger, actually undergo the maximum possible temperature change. The other fluid would change temperature more slowly along the heat exchanger length. The method at this point it is concerned only with the undergoing the maximum temperature change. The effectiveness E is the ratio between the actual heat transfer rate and the maximum possible heat transfer rate, where E is equal to Q upon the Q maximum, where Q is equal to CH into THI minus minus TH naught is equal to CC into my TCI minus TCO minus TCI. Effectiveness is a dimensionless quantity between 0 and 1. If we know E for a particular heat exchanger and we know the inlet conditions of the heat flow streams, we can calculate the amount of heat being transferred between the fluids by Q is equal to C minimum into my THI minus the TCI. For any heat exchanger, it can be shown that E is equal to functions of the NTU into my C minimum upon my C maximum. For a given geometry, E can be calculated using correlation terms of the capacity ratio CR, which is the critical radius of the insulation, is equal to C minimum upon the C maximum, and the number of transfer units NTU is equal to UA upon the C minimum, where U is the overall heat transfer coefficient and A is the heat transfer area. For example, the effectiveness of a parallel flow heat exchanger can be calculated with uh, NTU is equal to UA upon the
calculated with E is equal to 1 minus k exponential into में minus के NTU into में 1 into में 1 plus का CR divided by 1 plus का CR, or the effectiveness of a counter current flow heat exchanger is calculated with E is equal to 1 minus के exponential into में minus के NTU into में 1 minus के CR divided by 1 minus के CR exponential into minus NTU into में 1 minus के CR. For counter current flow heat exchanger with CR is equal to 1, when then putting the value of the CR in this equation number 1, which is above, then we obtain E is equal to NTU divided by 1 plus का NTU, because minus minus is equal to plus. The effectiveness NTU relationship of the effectiveness and tube relationship for a cross-flow heat exchanger and various types of shell and tube heat exchanger can be derived only numerically by solving a set of a partial differential equation. So there is no analytical formula for the effectiveness, but just a table of number or a diagram. These relationships are differentiated from one another depending in shell and tube heat exchanger on the type of the overall flow scheme, counter flow, counter current, or cross flow, and the number of passes, and for the cross flow type, whether any or both flow streams are mixed or unmixed perpendicular to their flow direction. Not that the CR is equal to 0 is a special case in which phase change, condensations, or evaporations is occurring in the heat exchanger. Hence, Hence, in the special case, the heat exchanger behavior is independent of the flow arrangement. Therefore, the effectiveness is given by E is equal to 1 minus exponential into 1 minus NTU. Now, we will discuss about some numericals. Then, the first numerical is a double pipe parallel flow heat exchanger used oil, where Cp is equal to 1.88 kilojoule per kg into Kelvin. Kg into Kelvin at an initial temperature of 205 degrees centigrade to heat water, flowing at 225 kg per hour from 16 degrees centigrade to 44 degrees centigrade. The oil flow rate is 270 kg per hour. Then we calculate A, what is the heat transfer area required for an overall heat transfer coefficient of 340 watt per meter square into Kelvin, and B is the determine the number of transfer unit, means NTU, and the third is calculate the effectiveness of the heat exchanger. मीन्स कि एक क्वेश्चन दिया गया है कि जिसके अंदर एक हमारा डबल पाइप पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर है, इसके अंदर कि इसके अंदर जो हमारी स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक कैपेसिटी जो है, तो वो हमारे 1.88 किलो जूल पर केजी केल्विन दी गई है। हमारा उसके इनलेट का उस पैरेलल फ्लो के का जो डबल पाइप जो है उसके इनलेट का टेम्परेचर हमारा 205 डिग्री सेंटीग्रेड है टू हीट वाटर, एंड वो हमारी जो फ्लो जो कर रही है उसका मास फ्लो रेट मीन्स कैपिटल मीन्स स्मॉल एम, वो हमारा 225 किलोग्राम पर हार है फ्रॉम 16 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और यहाँ पर ऑयल फ्लो की रेट जो है वो हमारे 270 किलोग्राम पर हार दे रखी है। अब यहाँ पर जो है हमसे ओवरऑल हीट ट्रांसफर, अब यहाँ पर हमारे 340 वाट पर मीटर स्क्वायर इंटू कैलविन के लिए ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की रेट जो है और उसका हीट ट्रांसफर का एरिया जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हमसे वो पूछा गया है। सेकंड यहाँ से हमसे एनटीयू पूछा गया है, मीन्स नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट्स, मीन्स कितने अमाउंट ऑफ हीट जो है वो हमारी ट्रांसफर हो रही इन अ पर्टिकुलर सिस्टम एंड इन अ यूनिट। एंड थर्ड इज द मीन्स उस हीट एक्सचेंजर की इफेक्टिवनेस हमसे पूछी गई है। Now we solve
This then you know that you know that you know that MC P MCP into the into the delta T MCP into the delta T MCP into the delta T for oil for oil is equal to for water for water then CP and CP water is equal to 4.18 kilo kilojoule per kg into Kelvin into the Kelvin. Then is equal to then is equal to 270 into the 1.88 into the 205 minus K T H naught minus K T H naught T H naught is equal to 125 into the 4.18 into the 4 minus 16 4 minus 10 and TH naught is equal to then TH naught is equal to 153 degrees centigrade degree centigrade then
डेल्टा T1 इक्वल टू 205 माइनस के 16 इक्वल टू 189 डिग्री सेंटीग्रेड एंड dt 2 equal to 153 minus k 44 equal to 109 degree centigrade. Degree centigrade. Delta TLM TLM equal to 189 minus k 109 divided by natural log of 189 divided by 109 is equal to 135.4 degree centigrade. 4 degree centigrade. Now we will discuss about the point A. Point A. A is equal to Q upon A. Capital A is equal to U Q Q divided by capital U into A. The TLM is equal to MW into A CPW into A DTW is equal to 0.148 meter square. Meter square. Now MCP water MCP water equal to 225 into 4.18 is equal to 9.40 into 10 की power 10 की power 10 की power 5 joule per into Kelvin. And into Kelvin.
MCP oil, MCP oil, MCP oil is equal to MCP oil is equal to 270 में 1.88 is equal to 5.076 into में 10 की पावर 5 जूल per bar. Then C minimum is equal to minimum is equal to 5.076 into में 10 की पावर 5 to 10 power 5 joule per hour into Kelvin is equal to 141 watt per Kelvin. Now we will discuss about NTU is equal to U upon U upon A into में UA upon C UA upon C minimum um, um, is equal to 340 340 into में 0.148 divided by 141 is equal to 0.36. Now we will calculate C. Now we calculate C. Point where capital E is equal to 1 minus k exponential 1 minus exponential into में minus k UA minus k UA divided by C into में C minimum C minimum
minimum less 1 plus k c minimum plus c minimum 1 plus c minimum divided by c maximum plus c maximum divided by divided by 1 plus का c minimum divided by c maximum and is equal to is equal to 28 cent. Thank you. And this and that is called NTU method or effectiveness methods or numbers of transfer unit methods. Thank you.